Firstly, I must thank the vast sea of love that I see before me. From every phase of my life, people are here. From my childhood, my cousin is here, and his wife. My Mamaji and Mami are here. My Masi's children are here. There they are. My brother, Citibank people, where I spent 10 years, where I opened account for Niti, for Achla, Thomas Cook, all my travel colleagues. Thank you, everyone. Most of all, thank you, Amitabh ji, for finding time, Pavan ji, Kishwar. These people knew each other much before I even thought of getting them together. Neeru ji, thank you for what you've done for us in our lives. You picked us up for many years, and we prospered. I cannot sum my life in 10 minutes. I will be 83 in the next 5 days. Therefore, this book. Please read it. I assure you, you will cry and laugh together. I feel I have lived many lives in these 8 decades. Migration, disorientation, deaths of my family before they died physically. My grandparents died very early in life, when they were just 50 plus when they died. And that was all because of what happened to them. When I differentiate death in life, you might question me, what does that mean? It means the life of my family vanished. We lost our life in Peshawar that we lived in. We lost a culture. We lost a tradition. We lost a food. We were just nobodies. We came to be known as refugees. Even our high castes and names of pride meant nothing at all. But we had to live because we were living. And since we were living, we needed food and we needed clothing. We did not have a father. My parents separated about 3 months before she was born. And he remarried. Very happy for him. I honor him a lot because he was a wonderful poet. I read him much later in life. He's got about 14 volumes of poetry, which I will read out to you. We were just 3 young girls, more or less hidden by everybody. You know, हम लोग को लोग छुपा देते थे. मेरे नाना नानी को आके कहते थे, इसकी जल्दी से शादी कर दो, नहीं तो कोई उठा ले जाएगा इसको. And that is the truth. But this turmoil was, why was this turmoil brought on to our great country? I think we can all take this question home today. एक छोटा से 3-4 लाइनें आपको सदात हुसैन मोंटो की सुनाती हूँ. सिर्फ ये मत कहो कि लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे. ये भी तो कह सकते थे कि 2 लाख इंसान मरे. हम लोग कहते हैं हमने इतने मुसलमान मार दिए. कोई कहता है हमने इतने हिंदू मार दिए. और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं है कि 2 लाख इंसान मरे. ट्रेजेडी तो वो है कि मरने वाले और मारने वालों का किसी खाते में नाम नहीं है. ना इस्लाम को खराश आई है, ना हिंदुज़म को खराश आई है. वो भी चल रहा है, वो भी चल रहे हैं,
और उसके बाद, पार्टीशन के बाद देखिए आप, कम से कम 100 मजहब और ऐड हो गए हैं हम में, और वो भी चल रहे हैं. I've dedicated this book to my 2 sisters, Didi and Rupi. My lifelines. I don't think there has ever been a disconnect in our lives, except when death took away Didi from us. We shared poverty in childhood, hunger, grief. We lived in a small room, 10 by 10. We slept on the floor, we ate on the floor, we studied on the floor, but we were together. One night we went hungry, just one night. Somebody in Kanpur told my grandfather, who was a landlord and banker, his card reads that, a zamindar, कि आप ऐसे करिए, हम आपको कुछ स्टैम्प देते हैं, स्टैम्प पेपर देते हैं, आप कोर्ट में आके उनको बेचिए. तो बेचारे मेरे ग्रैंडफादर एक अजीब सी संदूक लेके और स्टैम्प पेपर लेके वो बेचने जाते थे, और उसमें से जो 100-200 या 150 रुपए जो कमा के लाते थे, उससे हमको खाना मिलता था. एक दिन वो भी नहीं मिला, तो हम तीनों भूखे सोए उस रात, और हमारी ग्रैंड मदर एक कोने में यूं करके बैठी हुई थी. She didn't want to look at us. We didn't look at her either. हम चुप करके सो गए. हमने समझ लिया कि आज खाने को नहीं मिलेगा. In form of our husbands. Strange is this ledger that God maintains. Nobody's ever guessed how he does his banking. We were in the bank together for 10 years. Vibha used to be at the sundries account and foreign exchange. हमें तो ऐसे कभी बैंकिंग नहीं आए जैसे खुदा को आती है या भगवान को आती है, क्या जिसको भी आती है. बहुत ही एक स्ट्रेंज लेजर है उनका अपना. Our husbands were a riot together. Baldev, my husband, Sushil Bhai, Didi's husband, his son and daughter-in-law are sitting here, and his brothers here, Sanjeev. And Brijesh, Rupi's husband. They ganged up against us, 3 sisters. They had private dirty jokes. They laughed at our Peshori food and our language. Pashlare da saag, a delicacy in our Peshori culture, was banned from menus. Khabardar jo pashlara kabhi bana to. The word suthan means salwar. It tickled them to no, I mean, pagal ho jate has has ke. Suthan, they would say to each other and start laughing. Hold on to their tummies and start laughing. They called us Pagoben, each one of us. They found even the Peshori names funny. If they played cards, then there was no night or day. If they sang, then there was never an interval. बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है कहने को जो मैंने बचपन से पूछती थी ऑलमाइटी से कि प्रभु ये क्यों हुआ, पर उसका जवाब अब इस उम्र पे आके मुझे मिल गया है. इसने नौकरी शुरू करी और एक रात में, एक अंधेरे में हमने वो पॉवर्टी लाइन क्रॉस करके हम प्रॉस्पेरिटी में चले गए. इस लड़की ने, द यंगेस्ट ऑफ अस,
She joined British Airways, and at that time, she was getting 7,000 rupees a month, जो हमने कभी सुना भी नहीं था. And my mother said, "ये प्लेटें चुकेगी, मतलब ये प्लेटें उठाएगी." When she heard about the money, then she kept quiet. एक छोटी सी अपनी नज़म सुना रही हूँ, भेंट करती हूँ. मैंने सईदा जी से प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर सुनाऊंगी. सबसे पहले इस ऑगस्ट टीम को, अमिताभ जी को, पवन जी को, किशोर जी की नज़र करती हूँ. एंड वेयर इज कार्तिका? Also, I'm overwhelmed at the patience shown by Westland, Kartika, Sonia, and Amrita. By the way, I've named Sonia Saint Sonia, so please give her a cheer. Where is she? Sonia? Where are you? सोनिया. एक छोटी सी नज़म, आप सबकी नज़र, अपने बच्चों की नज़र, जो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, मेरी फैमिली, अनिल, मीनाक्षी, ननी, निशी, everyone. Doctor साहब, thank you for giving me good eyes. My doctors are here. पवन जी, तुम मिले तो तुम्हारे मिलने से गुजरे मौसम की याद आई है. तुम मिले तो तुम्हारे मिलने से गुजरे मौसम की याद आई है, जब खिले थे गुलाब के मौसम, बेतहाशा शबाब के मौसम. वो मोहब्बत के शबनमी लम्हे जिनकी खुशबू से चांदनी महके. इत्तफाकन जो तुमको देखा है, सबको, आई एम मीटिंग ऑल माई फ्रेंड्स आफ्टर 3 years. इत्तफाकन जो तुमको देखा है, यूं लगा वक्त फिर से पलटा है. कितनी मजबूरियों के थे मंजर, दूरियां दूर तक रही हम पर, फिर भी तुम जानो दिल में रहते रहे. हम तसव्वुर में शेर कहते रहे, कैफ में गुनगुना लिया तुमको, धड़कनों में समा लिया तुमको. तुमको भूला नहीं गया हमसे, सिलसिला हर कदम रहा गम से. इत्तफाकन जो तुम मिले हमदम, गुजरे मौसम की याद आई है. If there is time also now. मैंने बहुत हिम्मत करी है. टैगोर को ट्रांसक्रिएट किया है, लव पोइम्स ऑफ टैगोर, और ये मैं पहले भी सुना चुकी हूँ. राधिका वॉज विद अस. राधिका, वेयर आर यू? हाँ, राधिका वॉज विद अस व्हेन द PM. बड़ी प्यारी एक गाना है उसको, तुमी राबे निराबे हृदय मामा. दैट इज द बंगाली name to it. And I'll read out the English first and then what I've written in Urdu with a co-author. You come to the silence of my heart of a still summer night, when the full moon envelops the desolate sky in a deep embrace, and my youth, my whole being, the world that I call mine,
are all surcharged with the glory of your advent. Like the full moon sailing across the silent summer night, your sad eyes keep a lonely vigil over all my wanderings, and your anchal envelops me with love. All my sorrows, all my dreams are made fragrant when you come to the silence of my heart of a still summer night. टैगोर की बहुत फेमस और पॉपुलर गीत है ये. उनको इसको हमने उर्दू नज़म में ट्रांसक्रिएट किया है. गर्मी की वो ठहरी हुई एक रात कि आप आए. गर्मी की वो ठहरी हुई एक रात कि आप आए, चुपके से मेरे दिल की खामोशी में समाए. जब चांद मुकम्मल था और चांदनी सुनसान फलक की थी हमागोश. वो मेरी जवानी, वो मेरा अपनापन, दुनिया जो कभी मेरी थी, अब आपकी आमद से बस आप हुआ चाहे. ये आपकी गमनाक निगाहें बेदारी के आलम में करती हैं ताक़ुब मेरी आवारगी का, ऐसे जैसे किसी खामोश शबे गरमा के बेपाया समंदर को महताब करे पार. और आप मुझे प्यार के आंचल में छुपा लें. दुख मेरे ख्वाब सब महक महक जाए जब आप मेरे दिल की खामोश पनाहों में चुपके से चले आए. चुपके से चले आए.